Good evening, friends. Hope you all must be fine. CA, जिसको हम चार्टेड अकाउंटेंट भी बोलते हैं, एंड ऑलवेज से कैन डू एनीथिंग. यू नो फ्रेंड्स, जब ये किसी के भी नाम के आगे जुड़ जाता है, ये 2 लेटर वर्ड, उसकी कीमत अपार हो जाती है. एंड देयर आर मेनी पीपल हु इज अप्रोचिंग, एंड आई वुड से हु इज अ फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट. एंड ऐसे बहुत से दोस्त हमें मिलते हैं. Friends, you know, there are more than 3,50,000 CA across the globe and approx 8 lakh students who are pursuing for CA right now. And CA का 2 दिन पहले ही न्यू कोर्स अभी लॉन्च होने का अनाउंस हो चुका है कि न्यू कोर्स आर कमिंग. बट सब कुछ होने के बाद जब बच्चा CA ज्वाइन करता है ना, उसके दिमाग में एक चीज हमेशा घूमती रहती है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आर्टिकलशिप, जिसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं. फ्रेंड्स, इंटर्नशिप इज समथिंग लाइक दैट कि आपको प्रिंसिपल के साथ में 3 साल की अपनी जर्नी साथ में बितानी है. लोग ऐसा हो सकता है कि जॉब जो है हर 6 महीने 1 साल में छोड़ देते हैं, बट टू स्पेंड द प्रीसियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ 3 years for with someone is really hard, and it prepares I would say footprints of your career with them. So obviously students, their parents, and not only parents, आसपास वाले भी बहुत कंसर्न होते हैं कि इसकी इंटर्नशिप कहाँ होनी चाहिए. उसी चीज के लिए फ्रेंड्स आज हम फिनटेक चाणक्य में लेके आए हैं कि नो हाउ ऑफ how to get a proper CA internship, which is the most important thing. For that, we have with us our expert panelist today, CA FENIL sir. FENIL sir, thanks a lot for accepting our invitation. Thank you. And sir, we know कि students में आप कितने famous हो, कितने popular हो, and you are always available for all the students and even members. So sir, thanks for accepting our invitation. We have with us DIVESH HARPALANI, who is an anchor, and thanks DIVESH for always be a part of that. Thank you, sir. And RIYA MANGLA, who is a LinkedIn influencer. Thank you, RIYA. Thank you, sir. Friends, going further on that thing, let me take a moment to introduce all our expert speaker today. Friends, अगर आपसे बात करूं मैं CA FENIL सर, अगर मैं गुजरात की बात करूं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो CA में होगा FENIL सर को नहीं जानता है. And he is very dear to all the students. In nutshell, sir is a past chairman of Ahmedabad branch for the year 2020-21. He has various degrees in his name like FCA, MCOM, LL.B, DISA. He is even a researcher, trainer, philanthropist, where he runs an NGO with the name of Sukrut. And he is doing an amazing activity with that. And friends, सर के टेन्योर में ऐसा कहा जाता है, when sir was chairman, students को सबसे ज्यादा माइलेज मिली हो, that was a sir era. And आज भी हम जानते हैं कि अगर आर्टिकलशिप की बात की जाए, तो अगर हमारे ऑफिस में आर्टिकलशिप में बच्चे आते हैं, that is because of sir, because of his initiative. कि जैसे ही अभी जब रिजल्ट आता है, sir float a Google form with even a members and with his students, and एक ये ऐसा सर ने इको साइकिल बना दिया है कि जहाँ पे सही स्टूडेंट्स को सही प्रिंसिपल मिल सकते हैं. सर, थैंक यू फॉर दैट. Talking about RIYA, RIYA Mangla is currently CA final student, and most important, she has just started with her industrial training. बहुत से CA students सोचते हैं कि इंटर्नशिप तो कर रहा हूँ, तो मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी हो तो, and that's true in a racket banking sir. Completed her articleship from Grant Thornton in Indirect Taxation Department. ये भी लोग सवाल पूछते हैं, सर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या जनरल, हम उसके लिए बात करेंगे. And she also creates content on LinkedIn and having more than 28,000 followers from that. Congrats, RIYA, for that thing. And even we have to learn a lot from you. Talking about our dear CA DIVESH HARPALANI, who have cleared his CA Inter with all India rank 6 and CA final with all India rank 13, and has been working as a management consultant with Bain and Company since last 18 months. And he did his articleship at Deloitte, means a big four. So having a various kind of experts in our panel today, I am sure it is going to help all of us.
Once again, I extend my vote of thanks on behalf of Fintax Chanakya, Chaudhary and Associates LLP and UCI पिला कि आप सब इस प्लेटफॉर्म पे आए एंड आप बच्चों को आज कुछ नई चीज सिखाने वाले हैं. Friends, when we are talking about the same, Panil sir, let me take an opportunity to ask first question from you directly. सर, सबसे अच्छा दिन किसी बच्चे के लिए कि उसका फाउंडेशन क्लियर हुआ सबसे पहले, तो उसने इंटर की एग्जाम दी एंड ही हैज क्लियर्ड हिज इंटर एग्जाम्स. उस दिन पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटी जाती है कि बच्चा उस समय सीए बन चुका है. एंड जब ऐसा होता है सर, तो सर व्हाट इज द स्टेप that a student or their family members should take after a positive result? Okay. So first of all, before I answer, like I would also personally like to thank Samir bhai that you arranged this particular webinar right now, or you can say online session right now, which is really going to make miracles because we are having a diverse profile of speakers. Like I am from practicing field, and along with that teaching field. DIVESH is from Big Four, and RIYA is yet into a final, but she is venturing into his industrial training. So really, this discussion is going to be very fruitful. And to my personal opinion, the day on which a student clears his intermediate, so surely it's a celebration time for him and his family. But apart from that, अगर हम उसकी मानसिक स्थिति देखें तो he is very much confused of what to do next. And that's what the right question to start with. So my personal opinion is उसे चार चीज के बारे में तुरंत ही सोचना चाहिए. जिस दिन वो दोनों ग्रुप पास करता है या लक बाय चांस एक ग्रुप पास करता है, उसे चार चीजों के बारे में सोचना चाहिए. The very first is, and this might change a bit by introduction of new scheme, right, which has yet been notified. Because उसके बाद ऐसा भी होगा, मेरा मन सर थोड़ा सा डिविएट भी होगा, बिकॉज अभी मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप के बाद आप आर्टिकलशिप शुरू करो, बट वंस यू जॉइन द न्यू स्कीम, राइट, you can join the articleship only after passing both of the groups of intermediate. So we are not going to all those stuff because all those things is to open from the Pandora's box of ICAI on the 1st July, right? But a general opinion that either belong to any of the schemes, may be old or per se may be new. फर्स्ट आपको सोच लेना चाहिए कि आपकी इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग्स है, राइट, आईटी एंड ओसी, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? बिकॉज ओनली आफ्टर दैट यू विल बी अ एप्रोप्रिएट पर्सन टू स्टार्ट द आर्टिकलशिप. तो वो अगर हो गई हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको कंप्लीट करनी चाहिए. सेकेंड, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप एक ग्रुप में पास हुए हो तो फिर देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेकेंड ग्रुप. And here the point comes is that whether I should join the articleship after both the groups, right, or I can start right now. But that will take as a separate question later on. So first is to complete the trainings. Second is to think upon if any left. Third, very important, is to identify few areas of interest. Now, normally what student says, I have one area of interest. Now, it should not be like that because yet you are not being exposed to the practical world. So rather than having just one area of interest and trying to search the firm based on that would not be a right thing. So what I suggest is, my personal view is, right, RIYA and DIVESH may have a different opinion, and I'll request that they will add to it, that you identify few 2-3 areas of interest, prioritize that and try to find a firm which can cater to more. Means if I have, let us say I like law, tax and IT, technology, then I try to find a firm where I can at least get the exposure of one or two. So later on, by working in it, I can really identify my niche or my actual area of interest, and then how I can grow as a professional article assistant. And the last is, I should just decide that whether I want to go in practice or I want to go for industrial job, and that too I should not fix it. Again, I should have a priority. For example, if I'm more inclined towards practice, I'll say I want to go into practice, and then if not job, or job and then practice. So 4 things in my opinion: training, if any groups left out, identify your areas of interest, and at least try to set a priority that whether you want to go for job or for practice,
I think so. If you're able to clear up this, right, then that would be the right move to move towards getting the right articleship. Great, sir. Great. Really, it was a, I would say, deep answer from your side. Now, coming with the same question from Divesh, who became CA before few years only. So, what is his opinion on this part? Please, Divesh. No, I totally agree to what Fenil sir said. I think the first thing that you'll have to start, doing after you clear inter, and in fact, I would say before you clear inter, you should have an answer ready with you. कि मेरे को कौन से fields में articleship करनी है? What are those fields that interest me? So it should not be, let's say, just कि income tax में ही articleship करनी है. You can shortlist 3-4 fields, and you may have a priority order in your head कि मेरे को ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, but this is my priority. And once you clear, hopefully once you get a positive result, then like sir said, you should get done with all your um, ICAI trainings. You should have your resume ready, and you should start applying to all those forms where you are confident you will get a good exposure for articleship. अब ये कौन सी forms होगी, I think sir will cover in one of those questions, but broadly you will have to do that research, and I think that is something कि आपको अभी से लेके रिजल्ट तक में ऑलरेडी वो रिसर्च आपको चालू कर देना चाहिए. Great, great. Ria, if I'm coming with the same question with you on this part, because अभी आपने इंटर आपने पास किया था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? If you can please provide some points. So the first question that came to my mind after clearing my intermediate is, of course, which field to go for, because there are multiple fields to go for. First, of course, to CA students that came to our mind is statutory audit, because that is the field in which the most of the students pursue their articleship. Then, first of all, the first decision that we take after clearing is कि कौन सी फील्ड में जाना है हमको, कैसे प्रोसीड करना है, ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, कहाँ से अप्लाई करना है. तो सबसे पहले तो सिंस अभी रिजल्ट आने में टाइम है, सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि ट्रेनिंग्स हो सके तो पहले ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद इट बिकम्स सो डिफिकल्ट कि ट्रेनिंग्स को भी मैनेज करना है, इंटरव्यूज को भी मैनेज करना है, रिज्यूमे भी बनाना है, प्रिपेयर भी करना है. So many things get piled up. So try before getting results, complete your trainings, and after that जब results आ जाते हैं, go with कि कौन सी फील्ड चूज करनी है. अब फील्ड चूज करने में भी आप यू कैन थिंक ऑफ योर इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्स चूज किया था बिकॉज मेरे को टैक्स बहुत अच्छा लगता था पढ़ने इंटरमीडिएट में, तो इसलिए मैंने टैक्स चूज किया था. तो इसलिए अगर आपको भी अगर ऑडिट बहुत अच्छा लगता है, अगर टैक्स बहुत अच्छा लगता है, और यू कैन इवन गो बियॉन्ड अबव एंड बियॉन्ड बाय डूइंग फ्यू कोर्सेज, लाइक स्मॉल कोर्सेज आर आल्सो देयर, वो भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है to get to know your interest. Because एक बार, or if you don't know, तो getting a multiple exposure during your articleship is also best. But if you want to do into big fours and everything, तो एक particular field choose करनी है, तो you can do some courses and realize your interest where it lies. Yeah. Great, great. Moving further, we know ये CA है, इसमें पास फेल होते रहता है, कोई नक्की नहीं है कि ना है. बहुत से लोगों की स्टोरी, आज मैं किसी सीनियर सीए के साथ बैठा था, किसी सीए की ओपनिंग थी वहाँ पे बात चली. आज वो सीनियर सीए बहुत सक्सेस है, अहमदाबाद बेस ही है, तो उनसे बात चल रही थी, तो कुछ अटेम्प्ट्स की बात चली. तो एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे 10 साल लगे सीए बनने में. तो सीनियर ने कहा कि भाई मेरे फाइनल के समय पे भी मुझे 3 साल लगे पास होने में, मुझे भी 1-2 अटेम्प्ट लगे हैं. सब कोई रैंकर्स नहीं होते आप लोगों जैसे, टू बी फ्रैंक. तो इट हैपेंस. तो सभी बच्चों की कुछ ना कुछ कहानी है. ऐसा कहा जाता है आफ्टर मे देयर इज अ नवंबर, आफ्टर नवंबर देयर इज अगेन अ मे. दैट कैन बी पॉसिबल. बट यस, अगर हम 4 से 5 साल डेडिकेशन देंगे तो सीए कुछ हार्ड नहीं किसी के लिए भी. तो उन बच्चों के लिए कि अगर बाई चांस हम अगर इंटर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो रहे दोनों ग्रुप, अगर हमने एक ही ग्रुप पास हुआ, तो फैनिल सर ये सवाल आपके लिए. तो सर उनको अगर दे हैव क्लियर्ड वन ग्रुप, so they have to wait for second group. People have two dilemma in their mind. Mostly what they do कि मैं एक ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप क्लियर करने के बाद मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगा, और दे यूज्ड टू जॉइन द आर्टिकलशिप एंड देन परस्यू इवन टू क्लियर द सेकंड ग्रुप. सर क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए बच्चों को आपके हिसाब से? Okay, a very dicey question, because if any of this practicing chartered accountant might be seeing this or will see in future, right?
तो वो शायद से प्रेजुडिशियल हो सकता है मेरा आंसर देख के, बट फर्स्ट आई गिव माय आंसर, राइट, दैट see it ultimately depends upon a student at that point of time, because see for example उसका एक ग्रुप अगर उसका दोनों ग्रुप बाकी है तो कोई सवाल ही नहीं आता, परंतु उसका एक ग्रुप हो चुका है तो then he just need to do a SWOT analysis that उसका जो सेकंड ग्रुप जो भी बाकी है, राइट, उसके लिए how well he is prepared with. फॉर एग्जाम्पल अगर उसे पहले से ही मीन्स उसने दोनों ग्रुप दिए थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज श्योर कि वो फर्स्ट ग्रुप हो जाने वाला है, उसका सेकंड ग्रुप शायद से डाइसी है और उसने तभी से पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड नाउ ही हैज टू गिव द सेकंड ग्रुप एंड ही इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, देन माय ओपिनियन इज ही शुड जॉइन द आर्टिकलशिप. बट इफ ही इज नॉट श्योर ऑन एनी ऑफ द थिंग्स, दैट इज उसका जो ग्रुप अब वापस से उसे अपीयर करना है, राइट, उसके लिए वो थोड़ा भी तैयार नहीं है या उसकी तैयारी बहुत स्ट्रांग नहीं है, then my strong opinion will be he should not join the articleship right now, but first he should focus on completing his both the groups, right? Because somewhere personally also many times interacting with students, that one group students and pre-intermediate passing joining the articleship, I felt somewhere that when the actual time of executing what they learn comes, right, that is for example let us say March or for example September, then these two are the months where they need to actually work in the office, but at that point of time itself they are on the leave because either they are preparing for May attempt or they are preparing for November attempt. So कैसा होता है, ना वो अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हैं, ना वो ऑफिस के काम को जस्टिस दे पाते हैं, and that's why probably the wisdom of ICAI and the present council might be also the same, and that's how in the new scheme to come this doubt is absolutely nullified, because in the new scheme you can say, right, that you can join the articleship only after you clear both the groups. So probably the new scheme also supports what I said. So my personal opinion based on अगर एकदम शॉर्ट में उसे समराइज करूं तो आपका एक ग्रुप होता है and you are very short with the next group preparation because you started prior to result. So go for articleship. Don't waste your time, right? But if you are not sure with the group which failed, then please don't go for articleship. Complete your preparations. Once you clear both, then you can go for articleship, so that you can just give justice to your learning also and your practical execution of learning at the office also. Very well said, sir. Because it is always experience in that part कि अगर आज बच्चे हम लोग के पास भी आ रहे हैं and for them this is a new world. I always say doing articles is a new world for them. उनको वो बोलते हैं ना कि ये हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं. Because for at least for a week he will be confused मुझे क्या करना है क्या नहीं. Second part, articleship ढूंढने के लिए students have mostly they used to give their interview in 10 to 12 forms. They have to decide that thing. Then when they join, उनको मालूम पड़ना चाहिए कौन से मैं प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, कैसे यूज करना है. At least it takes them 20 to 30 days to settle over there. And जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में वापस से एग्जाम आने में is hardly 4 months. अगर 4 महीने में अगर 1 महीना उसने वहां पे निकाल दिया है, now he is effective 3 months. And I always say अगर आप आर्टिकल से ज्वाइन भी करो ना, you have to ask your principal very clear कि sir, since I have again an attempt, I have to give my paper. It can be possible कि भाई मेरे एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन हो सकता है, I have to at least give 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट जो भी है, whatever condition, मेरी इतनी प्रिपरेशन बाकी है सर, इतने दिन की मुझे छुट्टी चाहिए for my preparation. It should be very much clear if you're joining your articleship. बहुत बार क्या होता है, we want to get an interview, हमें उसको बस क्रैक करना है कि this is my dream firm, मुझे पे ना सिलेक्ट होना है. सर चलेगा सर, 15 दिन की छुट्टी में बहुत है मेरे लिए, तो 15 डेज कभी वापस में आता नहीं उसके लिए, जो मैंने अभी तक नोट किया है. So better for that thing if possible, if student is joining an articleship, be clear with that thing. हो सकता है आपको फाइनल में या तो आपका एक्सटेंशन मिलेगा या फिर फाइनल की थोड़ी कम होगी, तो जब तक मैं पहला स्टेप पूरा नहीं करूंगा इंटर क्लियर करने का, हाउ कैन आई गो फॉर फाइनल? दैट इज एटलीस्ट अ कंडीशन फॉर मी. So that is my opinion. Both other panelists, if they want to add anything, or should we move further? No, totally aligned with what Fenil sir said and what you said, sir. Same. Great. Moving further with that thing, हमने इंटर पास कर लिया, हमने सोचा हमें आर्टिकलशिप अब करनी है.
सबसे पहला पॉइंट आता है टू प्रिपेयर रिज्यूमे, जिसको हम सीवी भी बोलते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, because a firm is not going to meet you first of all. They will have a meeting with you, which can be through your WhatsApp, through email, or anything it may be. So what point a person should take care while prepare a resume for getting an internship? Divesh, over to you. So I think first of all, like I said earlier, कि जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक ही प्रिफरेबली अगर आप रेज्यूमे अपना बना सके तो उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा आफ्टर योर रिजल्ट्स, सो दैट इमीडिएटली आपके रिजल्ट के बाद यू कैन कीप शेयरिंग योर रेज्यूमे, कीप अप्लाइंग टू डिफरेंट फॉर्म्स. रेज्यूमे कैसे बनाना है, दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव. एंड रेज्यूमे के बेस पे you may be shortlisted by the very good firms, or you may even be not shortlisted. Like at that stage only you may not be shortlisted and even not be called for interview. So एक अच्छा resume बनाना is also very important, and जिसमें दो चीजें होती है, एक के क्या points लिखने हैं आपको वो भी, and किस तरह लिखने हैं वो भी. So it's not just about what you write but how you write in the resume, that is also equally important. There are a lot of resume formats that are available on the internet over LinkedIn. So it is advisable to kind of go through 4 or 5 such resume formats and pick up the best format, or maybe make collate 2 3 formats and make one format of your own. Write all the information over there and get it reviewed by 2 or 3 seniors जिन्होंने पास्ट में, और अच्छे सीनियर्स जिन पे आपको ट्रस्ट है कि वो आपको रिव्यू करके देंगे, उनसे आप रिव्यू कराओ, बिल्ड इन देयर इनपुट्स, हैव दैट गुड रेज्यूमे विथ यू. And after your results finally you start applying using that resume. Now the question is which firm, in which case you can uh, again the same thing, the way you approach your seniors for getting your resume reviewed, the same way you ask them which firms they are working in, how has their experience been. Just because किसी firm का नाम अच्छा है आप जाके apply कर दो, that should not be your only criteria. Obviously that will be one criteria, but another criteria also is speaking to articles who have done their articleship from that firm or who are doing articleship from that firm. एंड लाइक फेनिल सर सेड, ऑब्वियसली जो आपने फील्ड्स डिसाइड किए उस बेस पे यू शॉर्टलिस्ट सम फॉर्म्स. तो आप अपने पास एक एक्सेल शीट बना लो कि ये 15-20 फॉर्म्स है जहां पे मेरे को अप्लाई करना है, कुड बी मोर कुड बी लेस. एंड देन यू नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी किस तरह अप्लाई करना है, उस पे यू डू योर रिसर्च कि ओके आई वांट टू टारगेट वन ऑफ दीज फॉर्म्स, हाउ डू आई अप्लाई, एंड देन यू रिसर्च ऑन दोस. So that populating that Excel should be your target, preferably before inter, and after inter you start applying, and then you keep filling saying, yes, I've applied, no, I've not applied, whatever. Great, great, Divesh. You have explained in a very detailed manner. Riya, if you want to add something on this point. Yeah, sure. So, since as you already said, this is the thing that the interviewer will first see, or the HR will first see, that is your resume. So, since we are still students and we don't know that how corporates work and how to prepare the resume, so first of all, जब हम पहली बार उसको बनाएंगे तो हमें difficulty आएगी कि format कौन सा choose करना है, कैसे बनाना है उसको. Same it was with me when I first to know कि हाँ resume भी बनाना पड़ेगा. Oh my God, ये तो काफी difficult सी चीज लग रही है. तो मेरे लिए भी था वो काफी difficult कि कैसे format, और सबसे बड़ी चीज जो लगती है कि उसमें लिखना क्या है कि oh my God, then you have to think about your awards and achievements that you have got. कोई है तो लिखना ही पड़ेगा. So it becomes difficult for the students who will be going to pursue their articleships and getting the positive results. तो difficult रहेगा, but the step by step process, first of all choose one format, as Divesh said, choosing the format which seems best to you and seems right to you. Then after that, putting the information, then you can write up this also, that you can divide into first 4 5 formats. For example, first you write your objective, then your educational qualification, because we don't have any experience yet. Then you can write about your technical skills or everything, and then awards and achievements. In technical skills, you can write up that you have completed your IT and OC, and you have little bit knowledge of taxation and audit. You can write these type of things. And then you can have awards and acknowledgement, in which you can write, if you are in regular college, then there are so many competitions that you must have taken participate in. So that's type of things you can write in that. And then your personal details. So that's how you can bifurcate your resume and prepare it
really well, you can just take care of two things. First, your grammatical mistakes shouldn't be there in your resume, and the second, it should be properly formatted, because this is the thing, because if something is coming up to you which is not properly formatted, so that shows that how you are as the person, right? That is the first phase of yourself. So that's why it should be properly formatted, and no grammatical mistakes shouldn't be there in the resume. That's why I also got my resume reviewed from Divesh itself and got the format as well from him. So just have some seniors from who can review your resume. This is like the very crucial step to get your resume reviewed, because mistakes they can see, we can't see it. हमें दिख रहा है कि हाँ बहुत अच्छा resume है, but the mistakes they are seeing वो different होता है, because they are seeing it from different perspective. So that's why it's very important कि हमारा resume को review कराएं at least from 2-3 people. Yeah. Fanil sir, if you want to add some points, sir. Yes, just a small 2 points to it. Yes, sir. Very rightly said by Divesh and Priya that yes, we should take the formats, but generally when resumes comes to me just for reviewing, or many times when I also take some interview of articles, many times it has been seen that just in adopting the formats, we miss out to change it, or it is not commensurating with what we are. Like, for just a small example, that in one resume I saw that in language is known, it was written that in the format it was written very fluent in English and Hindi, right? तो उसने उठा लिया, एंड फिर नीचे उसने जब अपनी वीकनेसेस लिखी थी या स्किल्स टू शार्पन लिखी थी, उसमें लिखा था कि आई एम वेरी वीक एट कम्युनिकेशन स्किल्स, and that's how. So now if someone will read this particular resume, right, then he will get confused that ऊपर आप कुछ और लिख रहे हो और नीचे कुछ और लिख रहे हो, right? And then I asked that why it is so. बोले अरे सर सॉरी, मेरा ऊपर का वो लैंग्वेजेस नोन है ना, वो मैंने नहीं लिखा, वो तो था ही, just I missed to change out on it. Then I told, okay, then your resume is very perfect, and you wrote perfectly that you are not good at communicating the things perfectly. So then I took it positively, but it's to be taken in a constructive form, that when you're adopting any of the formats, it should be appropriately changed. Yeah. All the points resonate with what you are saying. Your resume should not be, none of the points should conflict with each other. And second is, when Divesh told that we don't have any existing achievements, sorry, not achievements, but you can say not any existing experience. But at this point of time, if you quote something in your resume which makes out you different, right, then that would add a value to your resume. For example, if you're a student, right, and for example, if you're working in some students association, like we have Vikasa, Western India CA Students Association, or Central India CA Students Association, just that you mention there, right? Or you mention about some of your hobby or skill which assists in professional field, like you are good at journaling the things, you are good at making videos, right? You are good at reading, right? You are good at presenting the things. So probably, so don't just mention your skill, also mention that how your skill can be useful to the organization. Like, for example, if I'm good at reading, so I can mention in my resume that I'm good at reading and comprehending, and if I become the part as an article in your organization, I will try to summarize the income tax cases, and we will circulate to our other articles and to our clients. If I'm good at video making, then I can mention that I'm good at video making. We will prepare the videos on amendments and we'll share it with our clients. Something like this. If you write at that point of time that you are good at this and how you can help to that organization, then probably, in my personal opinion, your resume is set out from other resumes. This is what I wanted to add to it. Great, sir, great. Likewise, I want to put on few points out of all three experts' opinions. There should be a maker and checker, not only in preparing a resume, but for all the part of your life. जहाँ पे अगर maker और checker होता है, वो बहुत काम आता है. And you should be too much honest when preparing a resume. हम बहुत बार ना फेक देते कुछ भी, ये आता है वो आता है, सर हमने एक्सेल में हमने ये किया है वो किया है. It should not be like that. बिकॉज मैंने कहा आपको 3 साल तक आपको उनके साथ ही रहना है. तो जब मुझे 3 साल तक रहना है, तो शुरुआत अगर सच्चाई से होगी ना, वो लाइफ टाइम अच्छा रहेगा. बहुत बार आपके प्रिंसिपल अगर आपको इंटर्नशिप में रख रहे हैं, दे नो दैट थिंग कि आपको सिखाना है. आईसीआई ने भी उसके लिए आपको रखा है कि इंटर्न फॉर दैट. ये तो आपको क्या बोलते हैं कि भाई एक सीए को मैं भी अपॉइंट करवा रहा हूँ यहाँ पे,
and even they are paying you internship stipend like that only. तो आज अगर मेरे यहाँ पे कोई इंटर्न आता है, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि 2 महीने तो मुझे एटलीस्ट उसके ऊपर मेहनत करनी है. 2 महीने के बाद में ही विल बी क्वाइट फ्रूटफुल. फिर 6 महीने के बाद का प्लान क्या होगा, 1 साल के बाद का प्लान क्या होगा, उसकी छुट्टी कब आएगी, वो सभी प्रिंसिपल के दिमाग में होने वाला है. तो ऑलवेज बी लाइक दैट कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है या आप किसी का कोई रिज्यूमे बना रहे हो तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको. एंड जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा. आपने पूरा भर दिया 10 पेज 20 पेज नहीं, 1 पेजर. एंड यस, अगर आपकी प्रोफेशनल फोटोग्राफ साथ में हो रिज्यूमे के साथ में, इट एड्स फ्लेवर टू दैट थिंग. क्योंकि बहुत बार लोग रिज्यूमे बनाते हैं बहुत बेसिक लेवल पे. अभी बहुत से फॉर्मेट मिल रहे हैं एंड मैं देखे बहुत से अच्छे फॉर्मेट मिल रहे हैं आपको. इफ यू आर यूजिंग दैट थिंग ना, इट इज गोइंग टू ऐड अ फ्लेवर इन योर रिज्यूमे, सो इट इज गोइंग टू हेल्प. कमिंग बैक अगेन विद फैनिल सर, ये है व्हाट आई बिलीव सर. आपने 500 से 1000 बच्चों को आपने आर्टिकल से दिलाने में हेल्प की होगी. तो सर उसके मैं आपको उसके लिए मसीहा बोलूंगा उन सब के लिए. तो सर फॉर दैट थिंग सर, कैन यू हेल्प अस विद दैट हाउ टू सिलेक्ट फ्रॉम एंड व्हिच commensurate with future career aspect of the students. Okay. So मेरे लिए भी बहुत ही difficult question हो जाता है because see when a student comes he first need a list. So I provide the list of firms. Then second is what happens, he filters from that list, right? And then he again asks you, now can you prioritize? So earlier I was prioritizing in a very liberal manner, right? And when prioritizing comes, it also adds your own prejudices. But then what happened, sometimes on a lighter note I'm saying, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए समीर जी मैंने आपको सेकंड डाला और किसी और को फर्स्ट डाला, राइट? तो फर्स्ट वाले के यहाँ जाएगा इंटरव्यू देने, राइट? फिर वो बोलेगा आर यू श्योर? तो बोले नहीं आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. तो सामने वाला क्यों? तो बोले कि यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, नाउ सेकंड इज द समीर भाई, राइट? देन थर्ड इज आपको आके बोलेगा यू आर सेकंड, थर्ड इज समवन एल्स. सो देन पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट you are giving ranking. So I thought no, it's not like so. So what I personally believe is like one should be clear that whether he wants to go for industry or for practice, right, at this point of time. But again, students are not at this juncture, students are not, see there are some students who are very much sure, right, that they want to go into industry, right? Then they will either join the big fours, right, or they will also, apart from in the last year of their training, practical training, they go for industrial training. They are very sure from day one itself. And those students who are very sure, then this part will not be helpful to them. But those who are dicey, right, that whether they want to go for job or they want to go for practice, then it will be like, first you personally meet some mentor, some of your friends, right, some of your teachers, right, and some of the chartered accountants who are already into practice and job. Meet 2 of them, right, and try to discuss with them with whom you gel up. And then you decide that whether you want to go for practice or you want to go for job. Because see, no one can say that job is perfect. No one can say that practice is perfect. Because it ultimately depends on आप कैसे उसके लिए रेडी हो और आप उसको कैसे लेते हो. तो मेरे मुताबिक अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो आर्टिकलशिप 1 वीक के बाद ढूंढना शुरू करना. उसके पहले इसके ऊपर आना देखो कि भाई whether you want to go for job in future or practice in future. And believe me, आर्टिकलशिप सिलेक्ट करना एंड ज्वाइन करना कोई जल्दबाजी में लिया जाने वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए. I know that if you go and meet any chartered accountant, if you come to me for example, if I taking an interview, I'll say that मेरे पास जगह नहीं है, right? जितना हो पाए उतना जल्दी मुझे आंसर देना, but that is my own personal interest. But when it comes to, you all know demand and supply, right? We all know economics. Then believe me friends, there are so many firms who are in need of articleship, right? And there are very less eligible articles who are going to do articleship. Don't take it otherwise. But why I'm saying this, so that you don't take a very, very, very crucial decision, right, in haste. कोई जल्दबाजी नहीं है. आपको जिस फील्ड में चाहिए उस फील्ड में आपको आर्टिकलशिप मिल जाएगी. बट सबसे पहले व्हाट इज योर इंटरेस्ट वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है. तो इफ यू आर नॉट क्लियर, then take mentoring, right? Meet 2 types of people. One is the seniors and another are
the youngsters who are right now in articleship, try to note down the points and try to come at a decision. And well and good, if you come to a decision that yes, you want to go for job or you want to go to articleship, then it's fine. And if yet you are not able to decide, then as I told in my first answer, prioritize my first preference. See, because when you cannot exactly decide the priority, then you decide the preference, right? Then you say that my first preference is I want to go into practice, and my second preference is I want to go into job. So doing a bit of exercise on your own, right? You decide either the priority or the preference, and then based on that, you select the type of firm. Like, for example, my view is, then I think so others may also add up to it, that if you want to go for practice, right, then you should try and select a firm which is a mid-sized firm, right, or which is more than a mid-sized firm and less than a corporate firm. I very rarely try to use the word big fours, right, because it's nothing, in my personal opinion, there are also many other firms, right, so not to prejudice the small or other firms, but a corporate level firm, like that's what we mean to say by big four firms. तो उन दोनों के बीच में आप कोई फर्म सिलेक्ट करिए, राइट, जहां पे आपको एक से ज्यादा चीजें सीखने मिले. यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डोमेन. Reason being, you want to go into practice, right? And if you are going to go for an industry, then obviously the best decision is you go for any corporate level firm. That is what we say as big fours, right? You go into that, and also at that point of time, it would be a very right decision, like what Riya took. From this time, join your articleship, right? You can have a thought of having an industrial training, because industrial training, pana, बहुत difficult है. I think so Riya would be a right person to answer on that, because many students come and there is no appropriate infrastructure or a platform by which all these things can be connected. So if you are sure that you want to go for industrial training, then your preparation to join that should start from the day one of your articleship. Now, it should not be like so that don't give justice to existing firm. Give justice to existing firm, but your field work, your research work, your establishing context should start from right now, so that when the right point of time comes to join, because I'm not saying now which time you can join, because again, this will change as per the new scheme. But when the appropriate time of joining comes, you can shift from your existing firm to the industrial training. So this is how you should go for. So first, try to identify either job or practice. If you're unable to set a priority, set a preference, first preference job, second preference practice, or something like that. And then you can go for the selection of a right firm. Very well said, sir, and in a very detailed manner. It was really a very good guidance for all the students who are watching this thing. If I'm coming to DIVESH, when you were about to apply for internship, what was the thought process on that? I think if we talk about, with respect to this particular question, so I think I totally align with what sir said. The criteria should be in your head. You decide that preference between a job and, between practice. And the other thing would be, let's say, if you decide, like I had decided that if possible, I want to go for the corporate level firms. But then again, in my head, also the other thing was which field do I want to choose? And I had decided that I was really inclined toward tax. So for me, the preference of field was over the preference of the firm. So hypothetically, if I were not to get a taxation in a corporate level firm or a big four, I would have chosen a mid-sized firm where I could go for taxation. Because I feel that is extremely important at the end of the day. आपको कौन से field में काम करना है is more important than just a brand name or just a firm जहाँ पे आप काम कर रहे हो. क्या काम कर रहे हो will be more important. So I decided I want to go for, income tax as my direct tax as my first priority. And luckily I did end up clearing the interview at Deloitte and I got there. हाइपोथेटिकली अगर मेरे को वहां पे इनकम टैक्स का ओपनिंग ही नहीं रहता और सिर्फ ऑडिट का ओपनिंग रहता, आई वुड हैव प्रोबेबली गॉन फॉर अ मिड साइज फर्म, बट आई वुड हैव स्टिल गॉन अहेड टू डू मेनली इनकम टैक्स. एंड देन अगेन ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग फॉर अ मिड साइज फर्म, ऑब्वियसly I will try to learn 4 other things. That was my whole thought process at that time. Great. Riya, coming to you for the same questions, what mindset you had? So I'm totally aligned with what Divesh and FENIL sir said.
So just I don't have anything much to say about it. It's just, first of all, clearing the criteria, doing a job or doing a practice. What you want to do in future will decide today what you wants to pursue your articleship, whether in mid-size, whether in a small firm, or whether you wants to pursue in a big four or in a corporates. So that will be the whole criteria to decide what you wants to do. Yeah. Great. In my opinion, I will add few points with this thing. You all three have said a very well thing, but being a person who is the before a decade, there was a person named Samir Chaudhary, and he was the first person in the whole family to become CA. एंड जब तक सीए का कोई जानते थे भाई सीए क्या है, बस एक सीए करके हस्ती होती है वो पता था. अब अगर मुझ जैसे बंदे से बात की जाए कि ऑब्वियसली आफ्टर डिकेड वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, नाउ वी आर हैविंग अ 7 partner firm, हैविंग अ मल्टी सिटी लोकेशंस, एवरीथिंग इज देयर, वी आर एम्पावरिंग मेनी थिंग. तो जब स्टूडेंट्स आते हो हम सोचते हैं कि हमने क्या सोचा था उस समय था. तो जैसे फैनिल सर ने कहा, देयर शुड बी अ प्री डिसीजन इन योर माइंड. माना कि वो इमेच्योर डिसीजन होगा, बट दैट शुड बी देयर कि whether I have to do a practice or a job. Or even some students are there who thinks that मैं मुझे business करना है. It can be startup या अपने पेरेंट्स की पीढ़ी में बैठने की बात करूँ मैं, बहुत अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो देयर मोस्टली 3 ऑप्शंस विद दिस स्टूडेंट्स. जब मैं पहली बात करता हूँ मुझे जॉब करनी है, तो ऑब्वियसली आई शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सम बिग कॉर्पोरेट्स. वो मेरे माइंडसेट में होना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन दैट पार्ट कि मुझे अगर बिग कॉर्पोरेट्स में करना है तो कौन से फील्ड में जाना. अगर मुझे अभी फिलहाल मुझे फील्ड में नहीं सोचता हूँ मैं कि मुझे कौन सी फील्ड मुझे पसंद नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी एक्सपर्ट इन 1 or 2 थिंग, बट एटलीस्ट आई शुड नो एवरीथिंग. ये पॉसिबल नहीं है कि मुझे अगर अदानी, रिलायंस या लेट से बिरला मुझे जॉब पे रखता है तो मेरी सिलेक्शन प्रेफरेंस की ही जॉब देगा. पहली जॉब कभी आपकी मनपसंद नहीं होती, प्लीज नोट, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है. बिकॉज आई ऑलवेज से अ वर्ड विच मे बी आपको खराब लगेगा, पर एक है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर. एंड जब हमें जब पहली जॉब चाहिए ना, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि नहीं, हमें काम करना है. एंड वो अगर हम उस अप्रोच रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा. तो उस समय बच्चों को ये होना चाहिए कि मुझे अगर उस समय जॉब करनी है तो एटलीस्ट मुझे सब कुछ आना भी चाहिए. ये नहीं कि मुझे सब कुछ नहीं आएगा. तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे बिग फोर में जाना उस समय पे, कि जहाँ पे एवरीवन नोस अगर बिग फोर में जा रहा हूँ ना, मुझे एक स्पेसिफिक एरिया में 3 साल अपने लाइफ के निकालना है. आई विल बी ऑब्वियसली एक्सपर्ट इन दैट थिंग, पर सब कुछ नहीं आएगा. एंड इवन दे आर हैविंग एन हायरार्की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन दैट. मुझे बहुत क्लोजली पता होता है, सीनियर पार्टनर, देन पार्टनर्स, देन सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एंड देन कम्स अ लेवल ऑफ एन इंटर्न. उसमें पेड एम्प्लॉयज भी बहुत होते हैं उनके यहाँ पे, एंड उनके यहाँ पे एसोसिएट भी बहुत होते हैं. देन वी कैन अंडरस्टैंड अगर आप वहाँ पे सीख रहे हो ना, आप कौन से लेवल का सीखने वाले हो. बिकॉज जो सीनियर पार्टनर डिसाइड करेगा वो हमें नहीं पता है. एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग इन ए सेटअप मैनर कि पूरा सेट हुआ है, एसओपी सब चीज की बनाई हुई आपको मालूम पड़ रहा है. बट यू विल बी एक्सपर्ट इन वन ऑफ द थिंग, दैट इज फॉर श्योर. अगर बात करूँ आपको कॉर्पोरेट में जॉब करने जानी है, देयर मेनी कॉर्पोरेट फर्म लाइक, कि बहुत से ऐसी कॉर्पोरेट लेवल की भी फर्म है जो बिग फोर्स नहीं है. वहाँ पे आपको 3-4 फील्ड में सीखने मिलेगा. एंड वहाँ पे हो सकता है कि आपको क्लोजली सीनियर पार्टनर के साथ आप मिल के काम कर सकते हैं, विच इज अगेन यू आर गोइंग टू गेट ए गुड एक्सपीरियंस. आपको क्लाइंट के सीएफओ सीईओ के साथ में आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, एक वो भी अलग लेवल है. बट इफ आई थिंक कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, एंड मेरे फैमिली में ऐसे कोई लोग भी नहीं है जिन्होंने कभी प्रैक्टिस की हो, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रगल करना स्टार्ट करना अभी चाहिए. एंड अगर सोचूं मैं बिग फोर में जाके या बड़े कॉर्पोरेट फर्म में जाके मैं सब कुछ काम सीख लूंगा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. मुझे तब से मालूम पड़ना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसा होता है, पैन कार्ड का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मुझे जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, कुछ अगर क्वेरी आए तो ऑफिसर से कैसे बात करनी है. इवन ही शुड नो अबाउट फॉरेंसिक पार्ट, लोन कैसे अप्लाई करना है, इनकम टैक्स में कंसल्टिंग कैसे होती है, क्लाइंट अगर कभी फोन करके आपको हैरान करे तो आपको कैसे रिप्लाई करना है, आपको ऑफिसर से जाने का मिलने मिलेगा. दैट यू विल गेट इन अ स्मॉल एंड मिड साइज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फर्म इज द एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ दैट. बिकॉज एक मिट्टी होती है ना, अब वो बोलते हैं ना, एक पत्थर था, एक पत्थर को किसी ने बोला कि भाई तुझे मैं थोड़ा मार दूं,
तुझे थोड़े छेद कर दूं, तू भगवान बन जाएगा। तो बहुत से पत्थरों ने कहा, इन्हें मुझे दर्द होता है, मत करो ऐसा। एक पत्थर, सातवां आठवें पत्थर ने बोला, ये जितना मारना मार, मुझे मुश्किल नहीं है, तू मुझे भगवान बना दे। कुछ सालों बाद में जिन पत्थरों ने ना कहा था, वो उस मंदिर की सीढ़ियां बनी, और जिसने हाँ कहा था वो भगवान की मूर्ति बनी। तो इट डिपेंड्स ऑन अस फ्रेंड्स, कि हमें क्या करना है क्या नहीं। एंड हमारा फ्यूचर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वहाँ के एनवायरमेंट, कल्चर एंड हमारे प्रिंसिपल के ऊपर तो है ही। तो वी हैव टू डिसाइड ऑन दैट पार्ट। आई एज्यूम कि भाई जो बाकी 3 पैनलिस्ट है इस बात से एग्री करेंगे कि ना है, इनको थोड़ा सोचना पड़े। मूविंग फर्दर, ये सबसे भयानक सवाल जो लोगों के दिमाग में होता है, तो वेदर आई हैव टू अप्लाई फॉर बिग 4 और स्मॉल एंड मिड साइज फर्म्स। तो स्टार्टिंग विद फेनिल सर। इस बार ये चांस दिवेश को देते हैं। तो बाकी बोलेगा in the view of Divesh. Here I think so more the recent students, right? If they answer that, it will be much more beneficial. दिवेश, आई थिंक मतलब लाइक ये तो हमने डिस्कस किया ही है कि डिपेंडिंग ऑन आपको जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है, यू टेक दैट डिसीजन। अगर आपका डिसाइडेड ही है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, जॉब में जाना है, देन इट इज डेफिनेटली प्रिफरेबल टू गो फॉर अ बिग फोर और अ कॉर्पोरेट फर्म, बिकॉज देन यू गेट अ ब्रांड नेम ऑन योर रेज्यूमे प्लस यू गेट दैट एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो जब आप बाद में जॉब सर्च करने जाते हैं आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, इट सर्टेनली हेल्प्स आउट। एंड अभी ये ट्रेंड काइंड ऑफ देखा गया है ऑफ लेट के पीपल आर प्रिफरिंग कॉर्पोरेट फर्म्स मोर एंड मोर। बट आई फील वन थिंग इज दिस इज मोर लाइक कि ठीक है मेरे सीनियर ने किया मैं भी कर लेता हूँ, तो वो अप्रोच की वजह से अगर आपको बिग फोर जाना है सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से, सिर्फ स्टाइपेंड ज्यादा है इस वजह से, तो उस वजह से मत जाइए। गो ओनली इफ यू रियली वांट टू experience that corporate environment or really want to work in industry in future। अगर आपको पता ही है कि आपको आगे जाके प्रैक्टिस ही करना है, देन डेफिनेटली अभी से आपको बिग फोर में जाने का सेंस नहीं, अनलेस यू डिसाइड मेरे को एक्सपीरियंस फिर भी चाहिए बिकॉज आई नो लाइफ लाइक आई एम एनीवेज गोइंग टू डू। बट एट सम पॉइंट यू विल देन हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि सम पॉइंट आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट नॉलेज ऑफ फील्ड्स व्हिच यू हैव नॉट वर्कड इन द बिग फोर। सो वो चीज थोड़ा दूर का सोच के, rather than being myopic and बीइंग शॉर्ट साइटेड कि अरे मेरे को स्टाइपेंड बिग फोर में ज्यादा मिलेगा या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है या ब्रांड नेम मिलेगा, rather than thinking that, thinking of what I really want to do in the long term। डेफिनेटली ब्रांड नेम विल हैव इट्स बेनिफिट्स ऑन योर रेज्यूमे, पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप वो ब्रांड नेम लेके भी क्या करोगे? देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर नॉलेज across fields, across subjects, hence in which case the mid size, going for mid size really becomes important। great. Coming to Ria. Yeah, totally aligned with what Devesh said. And just one point that he said that we shouldn't, like for my situation, I belongs to a very middle class family. So for me, stipend was also the criteria. I wanted the good stipend. So that's why also I wanted to go for Big Four. But my also criteria was the profile and the brand name. As he said, brand name helps a lot. It helps me in my industrial training also. I got calls because of that. I believe that the that is written on your CV looks really good, and it helps us to get us further also. And he also said to me that for industrial training also prefer a brand. So since it helps us a lot in the future, the brand that is written on your CV. So that's why. So there can be like 2-3 criteria for you that you can think of, like the stipend also can be a criteria, like it was for me. It might not work for you, it depends upon the person to person. Then the profile that you are going for, if you want to do the practice. Now why we are emphasizing on it, because in big four में हम सारा काम नहीं सीखने वाले, like मैंने indirect taxation में काम किया है, तो I know only the things that is related to indirect taxation. I don't know कि audit में काम कैसे होता है, DT में काम कैसे होता है, I don't know how transfer pricing में कैसा होता है, I don't know how things work there. मेरे को नहीं आता है पैन कार्ड का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, because I worked into particular department. but मेरा वो था कि मेरे को फ्यूचर में जॉब ही करनी है, प्रैक्टिस जैसा मेरे को आई डोंट वांट टू हैव फॉर माई सेल्फ इन द फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग आर्टिकलशिप इन अ पर्टिकुलर डोमेन and into a particular firm or corporates. So that's how you can also decide for yourself that how you want to proceed.
ग्रेट ग्रेट रिया, आपने बहुत ऑनेस्टली सब कुछ बताया, थैंक यू फॉर दैट। कमिंग टू फैनिल सर, सर अब तो बजर आपके पास ही है, सर प्लीज गाइड अस। Yeah, just because exactly this question was exactly matching to like, or the answer was based on earlier that it's purely on either you said the priority, you are sure that you want to go for job or practice or set a preference, and likewise you can help a lot. If you are again still very much confused, like you are unable to not also decide that whether I want to go for Big Four or a corporate level firm or some very small or some, the best is go for a mid-sized firm. It will cater to later on wherever you can want to go. So then in that case, if That you're is not so sure, true. go for the mid-sized firm at that case. That's what my... Perfect Like sir. I can yeah, just to add on to what he said. So like I my consultant used to work into the mid-sized firm previously, and now she's working with Grant Thornton into indirect taxation department. So what happened in her firm, she used to work like for 2 years in multiple departments, and when you are able to realize where your interest lies, then you can have specialization in the third year itself. So then in 2 years, she got realization that she is having interest into indirect taxation. And then third year, she pursued in indirect taxation. And now she's working with, first she was working with EY, now she is with GT. So that's really helped that if you're working with mid-sized firm, it can really help you realizing your interest. Great, great. Few points that I want to add over here. Obviously, Big Four have their own level. उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है. बट मेरा सिर्फ एक सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ अपने आप से, क्या सिर्फ बिग फोर वाले अगर जॉब में किसी बच्चे को लेते हैं तो दे ओनली प्रीफर बिग फोर या बाकी बच्चों को भी लेते हैं? लेते हैं, ये तो नहीं लेते. सैलरी भी मोस्टली सेम होती है, हो सकता है 10 या 15% कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और जैसे हमने बात की कि मिड साइज फर्म जहाँ पे मुझे सब कुछ आएगा. इंटर्नशिप का मतलब क्या है? इंटर्नशिप का मतलब ना, हाँ फाइनेंशियल विल एग्री विथ मी ऑन दिस पार्ट. अगर आईसीआई इंटर्नशिप रखी है, का रीजन ये कि बच्चे को एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज हो. ही विल लर्न दैट थिंग इन अ प्रॉपर मैनर. अगर उसको वो चीज आनी चाहिए सब, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बोले भी मुझे हार्ट की सर्जरी के अलावा कुछ आता नहीं है, उसको बुखार का भी पता तो होना चाहिए, माथे दर्द का पता होना चाहिए, जो उसके इंटर्नशिप में होता है. वो जब कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन करता है तो उसको सब कुछ का नॉलेज तो होता है. तो एटलीस्ट बीइंग ए इंटर्न आई प्रीफर ऑलवेज कि बच्चे ने भले एक ही रिटर्न फाइल किया हो या उसने छोटा सा काम किया, उसको वो चीज पता होनी चाहिए. उसको आई रिमेम्बर माई एक्स बॉस हु डिड हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम पीडब्ल्यूसी. जब उसको ऑडिट करने की बात आती ना, अरे समीर मैंने डायरेक्ट एक्स से काम किया है, ऑडिट का है मुझे नहीं पता, लेट मी हेल्प. एंड जहाँ मैंने मिड साइज फर्म से काम किया था, आई वॉज नोइंग एवरीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड अभी भी ये होता है कि जैसे हमारी फर्म जो बच्चे आते हैं, मैं बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी फर्म में ये सब काम है, तो मुझे सिर्फ 3 साल देना तेरा, मैं तेरे को एक ब्लैंक पेपर में साइन करके दे रहा हूँ. अगर 3 साल बाद तो ये बोलता है मुझे दोस्त कि सर आपके यहाँ पे जो भी काम था मुझे नहीं आया है, मैं नहीं सीख पाया, एक चेक भी अटैच करता हूँ, जितनी अमाउंट वो भर लेना, 2 लाख रुपए तक का जो मैं छूट दे रहा हूँ, इट विल बी योर्स, मुझे कोई हेडेक नहीं. तो एक वो आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बच्चों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर तो आपका बहुत बड़ा है. बच्चों का फ्यूचर कोई लिमिट नहीं. जिसने बोला कि उनको बिग फोर में जाना है, एंड टॉकिंग अबाउट स्टाइपेंड रिया, इवन आई नो मेनी फर्म्स इन अहमदाबाद जो स्टाइपेंड ज़्यादा देती है, आईसीआई से भी ज़्यादा, जो आईसीआई ने रिकमेंड किया उससे ज़्यादा दी है. जैसे मुझे जब से मैं सीए बना, आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस फ्रॉम 2012, मैं हमेशा डबल ही दे रहा हूँ मेरी फर्म में. एंड फिर अ कॉर्पोरेट कल्चर ऑन दैट पार्ट. जैसे मेनी टाइम्स वी हैव कि भी एजीएम होती है, स्टार ऑफ द मंथ होता है एम्प्लॉयज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट सैटरडे उनके लिए पार्टी वाला दिन होता है. तो दिस मेक अ सेंस फॉर पीपल, एंड सेम थिंग अ पर्सन शुड नो. तो क्या उससे कहीं ना कहीं तो फायदा होने वाला है किसी ना किसी को. तो सेम में अगर फैनल सर आपसे अगर पूछूं मैं इसी बात में कि सर अगर आपके फैमिली कोई बंदा ने कुछ ना सीए कर रहा है, सर नॉट अ बायस ओपिनियन, इन अ Yes. सिंपल वे, सर व्हाट यू विल बिलीव कि आप मिड साइज कॉर्पोरेट फर्म में दोगे किसी को और अ बिग फोर? Mid size. मिड That's what साइज.
trusted on my answer in my. No. सर ऑब्वियसली ये क्या एक रिकमेंडेशन की बात है सिर्फ. रीजन क्या है कि हम हर चीज का हम देखते हैं. बिग फोर का सिर्फ एक ही चीज मुझे लगता है, बच्चों की पढ़ाई भी बहुत इफेक्ट होती है बहुत बार, जहाँ पे उनको आउट स्टेशन भी जाना पड़ता है बहुत बार. दैट इज पॉसिबल. उनको 8 9 10 बजे तक भी कभी कभी बैठना पड़ता है. और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना मिड साइज फर्म्स में या स्मॉल साइज में, वो खुद अपना नियम बनाते हैं. सर 7 बजे से क्लासेस है, 6:30 से क्लासेस है. सर मुझे 5:30 6 बजे निकलना होगा. एटलीस्ट क्या मेरा कहना है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सकती है. बिग फोर ऑब्वियसली इज अ गुड थिंग, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं. बट मेरा कहना ये है कि हमने क्या को दिमाग में डाल दिया बिग फोर बिग फोर बिग फोर. इट शुड बी स्टूडेंट्स शुड टेक देयर ओन डिसीजन विद अ प्रॉपर माइंड. तो क्या अच्छा रहेगा. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? यस सर. सोचता था पहले, but then I also started since last 4-5 years I also started seeing that even the article who is going into Big Four, right? Even after having that much of I'm not saying hardship, but that schedule, obviously a more working schedule than a normal firm, still they are getting ranks. And one of the example is with us right now as an expert. So then, then it was over. I was also many times confused that how this is all happening, right? So it ultimately depends upon the perception of a student, right? And how well he can take the things and let the ball be in his court to decide whether he want to go for which. But in case he's unable to, then I think so mid-size is the best fit for him. परफेक्ट सर, वेरी वेल सेड. बट सर मुझे तो एक पॉइंट मुझे बीच में किसी एक ने कहा था, मैंने उनसे बोला कि यार 12th में देखा है जो भी प्रीमियम स्कूल्स हैं अपने यहाँ पे, उन सबके बच्चों का रैंक आता है, नॉर्मल स्कूल के बच्चों का रैंक नहीं आता है. तो व्हाट दे सेड मी कि समझिए एक बात आप सोचना कि वो लोग कौन से परसेंटेज वाले बच्चों को लेते हैं. जिसके 90+ 85% वाले बच्चे हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं, एंड जो बच्चे आम बच्चे उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं. तो क्या इट डिपेंड्स कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं. नाउ मूविंग फर्दर ऑन दिस थिंग, मेनी टाइम्स पीपल आर कंफ्यूज कि मुझे कौन से फील्ड में सिलेक्शन करना आर्टिकलशिप का. Already we are running out of time now and we already have a very good discussion, so we will take a quick questions now as a fire chat round. तो अच्छा रहेगा. सबसे पहला सवाल कि which field to select, उनको सिर्फ डिसाइड कैसे करना वो चीज. फैनिल सर. Yes, so in their area of interest, and if they are unable to decide, then set 2 or 3 fields and set a priority, a preference. So either set a priority or a preference. ग्रेट सर. दिवेश. आई फील इफ यू नो, मतलब आप इंटर पे पढ़ के या इंटर में जो पढ़ा है आपने उस बेस पे, या इवन अदरवाइज इफ यू हैव अ फीलिंग ग्रेट, देन यू नो दैट प्रायोरिटी और प्रेफरेंस इन योर हेड. अगर नहीं पता है, देन अगेन स्पीक टू योर सीनियर, स्पीक टू पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट फील्ड. कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली काम क्या होगा उस फील्ड में, एंड वेदर वो आपको इंटरेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड उसके बेस पे यू डिसाइड दैट प्रायोरिटी और प्रेफरेंस. वन थिंग इज, सिर्फ इंटर की पढ़ाई के बेस पे आइडियली नहीं डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज फिर तो ऑडिट किसी को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज ऑडिट थियरी किसी को पसंद नहीं होती है. एंड देन डेफिनेटली यू विल गो ऑन टू चूज मे बी जीएसटी फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंटर में सबको बहुत अच्छा लगता है. उस बेसिस पे सिर्फ डिसाइड मत करना, स्पीक टू योर सीनियर्स आल्सो. Yeah, totally aligned. Speaking to seniors would really help, because that's how you will get to know कि काम होता क्या exactly. If you're working into audit, तो तुम्हें करना क्या होगा? You have to prepare work papers. So understanding the work, if that interests to you, then you can go. You are good to go with that field. Would be really good. वेरी वेल सेड. मैं एक दो पॉइंट्स ऐड करूंगा. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज मैं देख रहा हूँ ना, कि अगर हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस की बात करें, कन्वेंशनल प्रैक्टिस मीन्स इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस. जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न फाइलिंग करते हैं, हम कंसल्टिंग और लिटिगेशन की बात नहीं कर रहे. तो व्हाट आई सी, मे बी फैनिल सर विल एग्री विद दैट थिंग, इन नेक्स्ट 4 to 5 years वो काम वो ऑटोमेशन में आ जाएगा with the help of AI, data science and all these things. Totally. And even a tax consultant who are not CA, I'm not telling them anywhere low. पर क्या है, अगर आज CA में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वे स्पेशलाइज इन दैट थिंग, उनके लिए फिर लिटिगेशन हुआ, कंसल्टिंग एंड नॉन कन्वेंशनल एरिया लाइक ब्लॉकचेन, फोरेंसिक्स, वैल्यूएशन, स्टार्टअप्स, देयर आर मेनी मोर एरियाज ऑन दैट पार्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. तो जैसे भी मैं इसकी बात करूं, DIVESH की, ही इज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू बेन एंड कंपनी, दैट आई नो. तो अलग एरिया आने वाले और है भी. तो इसमें भी अगर जो फर्म यहाँ पे हेल्प करते हो, वहाँ पे उसको फोकस करना है बंदे को, साथ में ये फोकस करना है कि ये सब एरिया को मैं चूज कर रहा हूँ.
उसको एटलीस्ट बेसिक अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, उसको वो भी सोचना है, तो उसकी फर्म में उसको खुद को सीखना चाहिए घर पे, और उसको कहीं अलग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट क्या बच्चे को 3 साल का प्लान रखूंगा ना, कि मैं 3 साल में इतने सब्जेक्ट्स हैं, 2 महीने एटलीस्ट इस पे दिए, 3 महीने इसमें दिए, और जो मेरा बेस्ट प्रेफरेंस वाला है उसके मुझे एटलीस्ट 1 साल देना। बिकॉज सर आपको समय तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं हो पाओगे। क्योंकि मैं अगर एक सवाल सिर्फ सबसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक वेदर सीईओ एंड सीएफओ ऑफ अ कंपनी कैन से कि सर मुझे ये नहीं आता, आप किसी और को हायर कर लो? इज इट पॉसिबल? Not at all. It is not. So at least you, if you have a long term vision of 10 or 20 years, then you have to select on your area. It is going to help you. हमें अगले 5-10 साल का भी एरिया का मालूम पड़ना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। मूविंग नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने सिलेक्ट कर लिया मुझे कौन सी एरिया चूज करने हैं, कौन से फील्ड, कौन सी फॉर्म, पर अब रिज्यूम भी बन गया मेरा, अब मुझे अब जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अब जब इंटरव्यू की बात आती है ना, तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक जिसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या होगा इंटरव्यू में, वो जाते हैं एंजॉय करके आते हैं। एक बच्चा जो बहुत ही नर्वस होता है, जो उससे पर उसका बीपी ऊपर नीचे होता है या उसको फीवर आती है। एंड थर्ड, अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, जो हर कुछ सोच के आता है। एंड आई ऑलवेज प्रीफर आपको थर्ड नंबर बंदा होना चाहिए। तो फाइनल सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ऑन दिस क्वेश्चन, that how a student should prepare for articleship interview in a nutshell, sir. Okay, in a very brief, like when he's preparing, he should just see to it that what he has written in the resume, right? And first, whenever he is preparing for articleship, let us say for 5 firms to appear, so first is he should have the basic understanding of his area of interest. Now, see, basic understanding he gets from the what he studies at intermediate, and somewhat extra from the internet resources or from what he has read into that particular interest. Second is he should have the knowledge of the firm where he is going. Right now, he is going to the firm where from the website or from by meeting the articles itself, they have some good clients, right? And then if I go and I say that I don't want to go for an outstation audit, right? And that company is having almost all companies are listed and having the work outside, then it's of no use. So first is getting the knowledge of your own interest. Second is getting the knowledge of the articleship firm, right? And third is, if you are yet not confident, then make a point, be what you are. If in that particular interview, if something is asked and if you don't know, don't bluff, admit that you don't know, and tell that I came here to learn, don't know, but if you will teach me, I'm going to learn it. But at that point of time, don't bluff it and see to it that you are an interviewee, not an interviewer, right? वो जो एक wrong, काफी बार क्या होता है आर्टिकल्स में बहुत नॉलेज होने के कारण कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आर्टिकल्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो that should not come up. So if these things are clear, I think so the person is right to appear for the interview. Great, sir. Coming to Divesh. No, I 100% agree with sir, and I think सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे को बोलना था, जो सर ने बोला कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू लेने नहीं जा रहे हो। काफी लोग 50 क्वेश्चन पूछ के आते हैं, आप क्या सिखाओगे, आपके पास कैसे क्लाइंट्स है, कितने क्लाइंट्स है, कितनी एग्जाम लीव दोगे। जब आप इतने सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो, तो सामने वाले मतलब जो भी प्रिंसिपल भी है, उनको ये लगेगा कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग स्टाइपेंड क्या है, एग्जाम लीव कितनी है, रादर देन इंटरेस्टेड इन लर्निंग। सो यू हैव टू शो कि यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, जिस वजह से यू विल हैव टू, वन लाइक सर सेड, बी thoroughly prepared with what you have written on your resume. सेकेंड इज सपोजिंग अगर आपने लिखा है कि आई एम एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स लर्निंग, ठीक है, तो वो आपकी बातों पे से लगना चाहिए। यू मे हैव एग्जांपल्स टू कोट। सेकंड, अगर आप बोल रहे हो कि मैं इनकम टैक्स में काफी इंटरेस्टेड हूं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को इनकम टैक्स सीखना है, तो कोई रीजन होना चाहिए आपके पास, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट मेक्स यू इंटरेस्टेड इन इनकम टैक्स, व्हाई नॉट ऑडिट, व्हाई इनकम टैक्स, व्हाई नॉट जीएसटी। Third thing is you should go, like sir said, just reiterating, you should be well researched about the firm, ताकि आप basic questions उन्हें ना पूछे, जो आप already वहां पे जो काम कर रहे हैं उनसे आप वो चीज पता कर सकते हो। तो focus on what is more important, and last but not the least, in terms of preparation, तो let's say आपने इंटर में जो पढ़ा है, तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो आप बेसिक टीडीएस के सेक्शंस पढ़ के जाओ, पीजीबीपी के सेक्शंस पढ़ के जाओ। अगर ऑडिट है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ के जाओ, तो एटलीस्ट बेसिक
चीजें आपको आनी चाहिए ताकि अगर वो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे एटलीस्ट द बेसिक वंस यू शुड बी एबल टू आंसर. एंड अगर आपको नहीं आ रहा यू कैन बी ऑनेस्ट एंड यू कैन से कि यू नो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल हैव टू रीड दिस. बट ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Great. Very well replied. Riya, you want to add some point, please? Yeah, sure. So talking about interview, the first thing that comes to us is your confidence. I think अगर हम confident हैं, अगर हमें कोई question नहीं आता है, तो भी हम उसको अच्छे से answer कर सकते हैं. तो first thing in your interview is just be confident. अगर prepared भी नहीं हो, अच्छे से भी नहीं किया है, just be confident about it that yes, you will able to do it. So that is the first thing about it. And obviously before going to the interview it's always suggested कि पहले से अच्छे से prepare करके जाओ, whether it's HR questions and whether it's technical questions, because that preparation will help you to be confident over there. Like Divesh and sir said, that's to prepare, like knowing about the firm, like what you will say if someone is asking, tell me something about yourself. So what would you say? Just have a question beforehand. If someone is asking why audit, not taxation, so you have a question beforehand. Why not Big Four? Why not mid-size? So these type of questions prepare beforehand so that you can be confident in the interview. And like sir said कि हमें सारे questions नहीं पूछने हैं, वो भी हमें prepare करके चलना है कि हमें कौन से questions पूछने हैं. Just asking कि clients कौन से हैं, ये नहीं कि बहुत सारे questions, because we are not taking the interview, they are taking our interview. We need to understand this thing. So हमें हर चीज को prepare करके चलेंगे, then we can also be confident and able to ace the interview as well. Great, great. All the 3 points are really a very valuable one, and really it will going to help students. Few points I want to add. Most important thing, your grooming part. आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आपका ग्रूमिंग बहुत सही होना चाहिए. बहुत बार बच्चे होते हैं टी शर्ट पहन के आ गए, ये ना वो, नॉट एट ऑल. इफ इट्स अ बॉय, आपके बियर्ड्स अगर है भी तो इट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रिम्ड वन. या आप क्लीन से जा रहे हो, आपने कपड़ा अच्छे से पहने, आपके हेयर्स बहुत प्रॉपर्ली होने चाहिए, आपके कपड़ों से कहीं से बदबू नहीं आनी चाहिए. एक चीज, आपको वहाँ पे जाके जो लैंग्वेज यूज करनी है, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, यू आर फ्रॉम हिंदी, गुजराती, एनी वर्नाकुलर लैंग्वेज पॉसिबल, कोई चिंता नहीं, आप वही लैंग्वेज यूज कीजिए. वी बिलीव कि नहीं हमें इंग्लिश ही बोलनी है वहाँ पे जाके, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. बिकॉज अगर कोई सीए है ना, सीए बोलते हैं कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, एंड आपका जो प्रिंसिपल है वो सीए पास करके फिर आया है, आप सीए भी कर रहे हो, तो आपके दोनों चीज का वो फर्क मालूम पड़ना चाहिए. एंड सर, आपके साथ मुझे 3 साल या 2 साल निकालने हैं ना, तो मैं तो ऐसा ही हूँ. आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो सर पॉसिबल नहीं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है ना, वो आपको आनी चाहिए. आप बोलते हो सर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सर मैं भूल गया. नहीं, जो आपने इंटर में पढ़ाई की है वो आपसे नहीं पूछेगा कि अदानी का मर्जर कैसे होने वाला है. इज नॉट गोइंग टू आस्क कि रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट है तो उसमें टर्नओवर कितना, वो सब उसका मतलब ही नहीं है. बट यू शुड एटलीस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट. अगर लेट्स से आप इंडायरेक्ट टैक्स के लिए जा रहे हो बिग फोर में, आपको उसका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, तो आपको रखिएगा कि कोई बंदा, इफ एनीवन इज कमिंग टू मी, वो है. हमने तो सर जैसा बोला, आपने बहुत क्वेश्चंस पूछते बच्चे. पहले सर व्हाट आई डिड इन माय फर्म, मुझे 10 क्वेश्चन पता होंगे क्या होने वाला है. तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. मैंने इस बार बोला 10 क्वेश्चन के तुम एफएक्यू बना लो. कोई बच्चा आता है, उनको हम पहले टेस्ट लेते हैं बेसिक, तो उसको वो एफएक्यू देते हैं, भाई ये सब तो पढ़ ले, उसके बाद सवाल हो ना तो मुझसे मिलो. एंड Perfect. एंड आई बिलीव एक दो चीज और बच्चों को करनी चाहिए साथ में, कि आपको 5 ही फर्म सिलेक्ट करनी चाहिए. आप 10-12 में जाओगे ना, तो आप ऑब्वियसली खुद कंफ्यूज होंगे. आप पहले डिसाइड करो कि मुझे 5 या 6 फर्म में सिलेक्ट करता हूँ, उसमें मिल के आऊँ, एंड उनको ऑनेस्टली बोलो कि सर मैंने ये सब फर्म में इंटरव्यू दिया है, सर मैं कल या परसों डिसाइड करके बताऊंगा सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंटरव्यू विथ यू. सर आपसे मिला तो आपको ज्वाइन करने का भी फर्क नहीं पड़ता है, और सर फ्यूचर में अगर मेरे लिए कुछ भी काम हो, सर ऑलवेज टेल मी. दिस पॉजिटिव नोट्स फ्रॉम योर साइड टू प्रिंसिपल. दुनिया बहुत बड़ी है एंड छोटी भी है. पता नहीं सीए बनने के बाद आप फ्यूचर में कब किससे मिल लोगे, क्या होगा. उस समय उनको याद होना चाहिए कि ये बंदा मुझे मिला, तो क्या वो आप सबको हेल्प करेगा. मूविंग फर्दर ऑन दिस थिंग, वी हैव मोस्टली कवर्ड ऑल द थिंग्स. एक सवाल जो हमेशा बच्चों के दिमाग में होता है, पहले से खास करके आपसे पूछूंगा और बच्चों से भी, तो व्हाट नंबर ऑफ एग्जाम लीव students should expect for final exam.
Okay, again, keeping me in a very dicey situation. Sir, sorry to interject, लेकिन sir new course में I think this question will not be relevant only because new course में there is 6 months of. यार बचा लिया मुझे. Yes, friends, we are really happy to say that. Like many times it happens that we just, and my position ultimately becomes very difficult because I'm into both education industry also and in CA profession also. Yes. So I like seeing the perception of, because this can never have a one-way answer or a objective answer. It's a very subjective question. Yes, and obviously. to students that try to be honest, then they become so honest, right? That they even quote my name and say that इन्होंने बोला था ऐसा था, right? वो कि मैंने अगर एग्जांपल बोला हो कि समीर भाई की फॉर्म सेकंड आती है, ये फॉर्म फर्स्ट आती है, समीर भाई की फर्स्ट आती है सेकंड, तो सेकंड वाले को बोल देगा, right? And then if you are my friend, you call, क्या फैनल भाई आपने मेरी फॉर्म को सेकंड कहा था, तो मैंने बोला नहीं, it was just ऐसा था. फिर मैं स्टूडेंट को बोलता, what you did? He said, sir, you only told us to be honest. So at this point of time, I'll say that yes, here honesty means being diplomatic, right? Here honesty means what? Be honest in such a way that you don't do anything which is detrimental to either of the sides, right? That's what the true meaning of honesty, which you derive from Bhagavad Gita, right? So try to be that. Don't be totally honest, right? That you keep the person is helping you also in a very difficult team task. Yes, sir. बिल्कुल sir. Perfect. Friends, जो अभी रिया ने कहा, दिवेश ने कहा और जैसे सर ने कहा कि न्यू स्कीम में ये सवाल नहीं आने वाला है बिकॉज इंटर्नशिप विल बी ऑफ 2 years ओनली एंड उसके बाद में आपकी फाइनल की कोई तैयारी करनी है तो अच्छी न्यूज़ है. बट यस 2 साल की ही इंटर्नशिप नहीं हुई है, आपको प्रैक्टिस करनी हो तो 3 साल की होगी. ऐसे बहुत से सवाल लोगों के दिमाग में, वी विल ट्राई कि उसको भी हम सॉल्व करें. बट उससे पहले जैसे सर आपने कहा, बहुत सही कहा कि ना नहीं पता है आज के सर, आज का जो सवाल का जवाब जो मैं अपने हिसाब से मानूं, which should be a final both group exam, it should be between 4 months to 6 months. Yeah, I missed to give the answer. Yes. Yeah, you are. I missed to give the answer. Yes, कि at least it cannot be defined कि भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसा नहीं, at least 4 to 6 month होनी चाहिए. 4 महीने से कम भी ना हो तो उतना अच्छा है और 6 महीने ज्यादा भी नहीं. कि मैंने देखा कि जो बच्चे 7-8 महीने में भी जाते हैं छुट्टी लेने के लिए, वो पास होते ही नहीं कभी भी, बिकॉज वो प्रोकास्ट हो जाता है. अभी बहुत समय बाकी है, छुट्टी हो गई, कुछ एंजॉय कर ले, काम खत्म. एंड जो बच्चों को 4.5 महीने की छुट्टी मिली है ना, वो लगे रहते हैं बिकॉज 6 महीने का आपके मैराथन है. आपको 21 किलोमीटर का आपको रेस दौड़नी है. अगर आप कंसिस्टेंट दौड़ोगे आप जीतने वाले हो. आप बोलो भैया वो खरगोश जैसे भाग गया तो आराम कर लूँ फिर भागूंगा, कभी पास होना ही नहीं है. तो विच आई ओनली बिलीव, इफ एनी ऑफ बोथ ऑफ यू वांट टू पुट एनीथिंग. यस सर. Yes, Samir, here I would just I started experimenting this on students, and I told them that whenever they come and ask me that sir हम कितनी छुट्टी मांगे, तो मैं उनको 2 चीज कहता हूँ. That first, see, it's like for example Samir भाई, मैं और आप एक साथ रहते हो या हम दोनों पार्टनर्स हैं, and then I only decide and I tell you that I want this, then obviously your ego will hurt, to be very frank. So what I tell, and what happens right now is, अगर मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूँ कि तू 6 महीने की छुट्टी मांगता, वो सर को जाके बोलता है सर मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए. Rather than doing this, now what I tell to student is that there is no stereotype way to decide how many leaves you need. What you do is you plan on a paper, right? That I need this many days for this subject, and for example the number of days comes to 5 months, right? Then you will be worried. Oh sir, मेरे सर के साथ मैंने डील की थी 4 महीने की छुट्टी. मैंने रुक ना 1 मिनट, तूने ये प्लान किया ऑन पेपर, नाउ गो एंड मीट सर. Let your sir decide how much leave you want. Perfect sir, very well said. Confidence, then it is you both are preparing for both futures, right? अब मैं आके आपको बोल देता हूँ like I am an article that I want 4 महीने के लिए, तो you will say that भाई you are my boss, right? This kind of attitude neither works in professional life nor in social life, right? So what is best, you as a student you plan out, you discuss that plan with your sir, right? And you can also say something like this to your sir, that sir कौन से महीने में हमारा काम workload कम होगा. So your sir says that, for example, I'm just giving an example, workload in our office, because this will depend on office to office, will be less in, let us say, June. At that point of time, you as an article plan out your theory subjects training
आई मीन टू से आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, लेक्चर भरने, जो करना है, प्रिपेयर योर at that point of time and tell your sir that sir, I'll come only 4 hours a day with the commitment that sir, when the season will come, I'll come 8 hours a day. So don't take this kind of decisions just one sided and try to be a prerogative person rather than involve your sir. Many times आपके सर ऐसा बोलेंगे कि माना था मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 महीने के बोला था, बट डियर तुम्हारी प्लानिंग देख के, एंड दूसरा तुम मुझे पूछ रहे हो, वो जो एक एटीट्यूड होता है ना, राइट, आप मुझे पूछ रहे हैं, टेल योर सर दैट सर यू आर माय फादर फिगर, यू हेल्प मी टू लर्न द वर्क, देन इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी दैट यू सी मी मेकिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन सर मेरे मुताबिक 5 महीने आ रहा है, सर कैन यू हेल्प मी इन दिस, देन आई थिंक दैट almost 95% of the chartered accountants will help you. Till now they were just a mentor in your professional work, but they can also be your mentor in your education field, and that's how your problem of convincing your sir will go, because here you are asking him, you are surrendering to him, and if you go and say that I want 6 months leave sir, whatever may be, right, मैं तो कई लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, मैं तो ट्रांसफर तक लेने के लिए रेडी हूँ, पहले से प्रिपेयर्ड होता है. अगर इस एटीट्यूड को लेके आप जाओगे तो जैसे समीर जी ने श्योरली का वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज आल्सो वेरी राउंड, राइट, एंड इट इज आल्सो इंटर रिस्पॉन्सिव. आज आप आर्टिकल हो, कल जाके आपके भी आर्टिकल्स आने वाले हैं, right? So all this, the law of karma at the round, right, plays a very pivotal role. So if you do this thing, that is involve your sir also in deciding how much leaves you take, then I think your problem is very diplomatically solved out. Great sir, great sir. Even one thing I will add on this. आपने बहुत सही कहा इस बारे में. And जब आप इंटर्नशिप आप स्टार्ट करो ना, यू में आस्क देम कि सर टेंटेटिव मेरा प्लानिंग ये है, इतना होना चाहिए, एंड जो सर ने कहा कि एटलीस्ट कन्विंस योर सर. सिंपल 2 हाथ से ताली बजती है. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपके ऑफिस में सभी स्टाफ के साथ में, उसके क्लाइंट के साथ में, आपके सर के साथ में, एंड इट इज ऑलवेज सेड इफ समवन आस्क यू फॉर अ फ्लावर गिव देम बुके. अगर आपने कहा ये एटीट्यूड आपने रखा होगा आपके सर के साथ में, ऑब्वियसली आपको छुट्टी के लिए कहीं नहीं बोलेंगे सर, बिकॉज एक उसका फायदा मिलता ही. और जाके जैसे सर ने कहा ना, बहुत बार बच्चे होते हैं ऑफिस में आके, सर छुट्टी चाहिए सर, सर अब तो मुझे पढ़ाई बहुत है सर, लोड बहुत आ गया है. तो सर एक ही बार पूछेंगे फिर 2.5 साल तक क्या किया भाई तूने, तू तो ऑफिस से 6 बजे निकलता था, फिर तूने क्या किया. तो योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट एंड इट इज रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मूविंग फर्दर on the questions, Riya and Divesh, for this thing, how to reach out to HRs and get their email ID, please, if we want to approach some big company. And before that thing, I will add on one more thing. Riya, your experience in the industrial training. Yes, Okay. Riya. I think both these questions Riya will be best positioned Yeah, to that's the answer. thing. So over That's to why you, Riya. I have asked her. Okay. So coming on to reaching out to HR. So अब सब कुछ बन गया है. We have our resume with us. We are well prepared. But to get to the interview, we have to apply for it. So अब apply कैसे करना है? So there can be different routes that you can take for. So the best route that I have used for myself till now, it has been LinkedIn. Then there are WhatsApp and Telegram groups in which the vacancies has been posted, and from there you can get. And the third, you can even use cold emailing, which I used for myself and got into really good companies for my industrial training. And so these 3 types of routes you can use. Now, how to use LinkedIn? So first step for LinkedIn is updating your profile. For example, if someone is reaching out to me, ki mero just refer me in GT. So first step is I'll be looking at his, if he has not even updated that he's a CA intermediate student. So that means it reflects about him that he didn't even, bother to update his profile. So the first step, that update your profile, and whenever you are reaching out to someone, write a personalized message. Don't write like just hi, please refer me. That doesn't look or at all look good. Okay, and don't even ask, because the people you're reaching out might be busy in the office, they have their studies and lot of things are there to manage. Just don't say hi, how are you,
No, just draft up, perfect, like type message that hi, writing the name of the person is also very important, and then write a perfect message for them that hi, I'm a CA intermediate students. I just cleared my CA examinations and I'm looking for an articleship. And if possible, if there is any vacancy, then just please refer me. So, or you can, in against of using refer word, you can even ask for assistance. So that's how you can reach out to LinkedIn. Then coming to, there are several Telegram groups which are really helpful, where constantly vacancies have been posted which can help you. That हर समय क्वेश्चन आता है कि HR की email IDs कैसे मिलेंगी. There are LinkedIn groups, there are Telegram groups, WhatsApp groups, from where you can get the email IDs and apply there. Right? LinkedIn पे भी कितने लोग पोस्ट डालते हैं डेली. Just follow some hashtags like hashtag articleship, follow some hashtags and apply through them. Then coming on to cold emailing, like if you want to apply into the big four, you can use this. And it works for me, it might not work for you, it depends upon person to person. You can just, the email ID is having, particular domain, like person, first person dot, second person at the rate. For example, if it is Deloitte, I don't know. For example, if a GT, it's at the rate in.gt.com. So every person would be having the same email ID in the firm. So you can use this method also. And if they have the vacancy, like I got into 2 companies, even in 5 minutes, I got the reply. So that's how you can apply and reach out to the HRs and even the managers who are working into that company, because some companies didn't even let them know that they have the internal vacancy, but no one knows that they have the vacancies. So in that case, that can help you a lot. So that's a little about it. And I will just little bit add on upon to the LinkedIn, how you can create your LinkedIn profile really better. First is, updating your profile and have everything. If you have any achievements also, your education, from where you got your schooling, your college, update everything on that. Other than that, if you have some, you can also post a little bit content on it, so that can create a little bit image in the people around you. Yeah. Great. Great, Riya. Very detailed reply on that part. Anything you want to add, final sir? Right, sufficient. Great. Divesh, you want to add anything? No, very comprehensive reply, I would say. Great, great. Riya, thanks a lot for that thing. Really, it's a comprehensive one. Now, going at the end of the part, before that, let me have few testimonials and questions if we have on a chat box on live session. Connect Steven said, hello, Finance and Samir sir, you both are inspiration. Thank you for that. Asma Singh says, thumbs up. Vikas Singh have asked, what should be a mindset to crack a big four interview? Divesh, I think so. I think the mindset should be the same, irrespective of whether it is big four or a mid-size interview. Yeah. I don't think, irrespective, you need to be formally dressed, you need to be well spoken, you need to be well read, your resume should be nice, you need to ask correct questions, you need to be well prepared. वो तो दोनों में same रहेगा, चाहे big four हो चाहे mid-size हो, but do ensure that. Mindset is articleship चाहिए. That's it. Most important your mindset and your attitude matters a lot. आप में बोलते हैं भले 2% कॉन्फिडेंस हो, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप में कॉन्फिडेंस सही हुआ एंड जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो बोला कि बिग फोर में आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट यू शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज. वो इंटरव्यू ले रहा है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसा सोचेगा भाई गधे हूं मैं क्यों लूं. एटलीस्ट ही बताए जब हम इंटर्नशिप में जा रहे हैं ना, आपके प्रिंसिपल को ऐसा फील होना चाहिए ना कि माई फर्म डिजर्व्स हिम. Yeah. ये बंदा चाहिए कुछ भी करके. अगर आपने वो 10 या 15 मिनट का इंटरव्यू अब तक आपने वो को क्रैक कर दिया ना, वो फॉर्म आपके लिए है. और वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपने इंटरव्यू देखा, आप निकला, बोलता आपको मैं एक दिन में बताता हूँ या कुछ भी हो, एंड वो फॉर्म से आपको वापस फोन आए, आर यू गोइंग टू ज्वाइन, समझ लेना कि भाई यहाँ पे हमने ना किल्ली ठोक दी है, और वो अच्छी फॉर्म है मेरे लिए, एंड वो फॉर्म आपके लिए केयर भी करने वाली फ्यूचर में, जो मैं मानता हूँ. पहले सर, यू वांट टू पुट एनीथिंग एल्स? Yeah, absolutely. You just make yourself employable. Like articleship के लिए word नहीं है,
right? आप job के means आप articleship के लिए fine, but also try to see to it that they understand that you are also valuable for their organization. That mindset and being diplomatic in answering what the things are right. Surely. Great, sir. Great. Parth Makija said, thumbs up. CareTech said, thanks for Samir sir for your insight. Thank you. Very good guidance by all the panelists. Divya Mangla have asked, some have well known to you maybe, Riya. What do you say, Riya, when you are being asked, tell me about yourself? Okay. Uh, so I bifurcated my answer I used to give into the interviews. First, I started with from where I belong, and then answering it to my extra co-curriculars, because about our educational qualification is already written, about our experience and everything is written, but we can emphasize on our uh, extra co-curriculars. That's what I used to tell in my tell me something about yourself. I used to emphasize that I do painting, and I'm having a small business out of it as well, and I love public speaking. That's why I've been part of conferences and and the competitions organized by ICAI. That's how I used to start, and then coming on to that. Yes, I'm having. That's how I applied into the finance fields, mostly into the industrial training. So I used to say that since I joined my articleship, I started investing, and that's how I got interest into finance. So that's how I used to mold up my tell me something about yourself, and then ending up with a little bit about what I learned into my articleship, and I'm interested in your company. So that's how. Great. Thank you, Divya, to ask this important question actually, because वो बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई पूछना हमें reply क्या करना है. Thanks for that thing. Now we are at the end of the words because it's near to 1.5 hours. हम लोग 1 घंटे का सेशन था. Starting, let me have a proper view now that we all four are on a screen. Yes. Let's have a quick round, sir. कुछ एक या दो नसीहत आपको स्टूडेंट्स को देनी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिवेश. It didn't get you, sir. क्या exactly? आपको अगर एक या दो पॉइंट स्टूडेंट्स को कुछ आपको सलाह देनी हो विथ एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट, या कुछ इंटर्नशिप में, एनीथिंग इट मे बी, यू कैन टेल नाउ. Sir, I'm sorry, your voice is breaking for me. I think Fen sir or Riya can go first. Yes, I'll Riya, just you fix can my go. internet Let me connection. go first. Let me go Yes. first. So to your question, I'll say wherever you end up in your articleship, I'll just say give your 100%. अगर आप mid size में भी नहीं होता है, मतलब कहीं पर भी होता है, just give your 100%. अगर आपको ऑफिस में ज्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है, then do self study. खुद से सीखो, खुद से काम करो. तो that will help you a lot, because कोई भी चीज हमने सीखी है वो हमेशा हमें कभी ना कभी तो काम आती है. तो इसलिए कोई भी हमें कुछ भी मिलता है, चाहे बिग फोर मिलता है, जो भी मिलता है, we have to give our 100% and keep on learning. So this should be the attitude for us, that we are keep on learning attitude that we are carrying with us. Great. Divesh, if you can add now. Am I audible now? Yeah, Yes, sir. please. Can you hear me? So basically, sir, what I feel is, and I've said this earlier also, okay, articleship is a CA student's first step into the professional world. तो ये जो step है बहुत ध्यान से लेना चाहिए, and you should take your articleship very seriously, because wherever you go in future, let's say any interview also you give, or even if you do practice, even if you don't go for a job interview, even if you do your practice, जो आपने articleship के time पे सीखा है वो आपको बहुत काम आएगा. So I think सिर्फ CA final There's some पढ़ना network जरूरी issue. नहीं है. Your articleship learning is इसके बाद what is important is ultimately how you work. Great. And just to add one more point on it, Yes. so articleship teaches us how to do work, because it's our first thing जहां पर हम सीखते हैं कि काम कैसे करना है, rather than कि क्या काम करते हैं. वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आर्टिकलशिप हमें सिखाती है कि काम कैसे करते हैं, दैट इफ वी आर डूइंग दिस तो उसको करना कैसे है. दिस इज द वन थिंग दैट आई लर्न इनटू माय आर्टिकलशिप, एंड यू विल आल्सो लर्न. तो ज्यादा फोकस कि काम कैसे करना है, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ thought process, how we do work and how we approach towards things. Yeah. Perfect. Moving to final, sir. It's just my two small
learnings or suggestions I can say on a brotherly notice. First, exactly what Riya said was, I was to say, she said last, that don't just focus on the end product, right? कि मुझे तो ये client का finalization ही करना है. You may or may not get that work, but enjoy the journey, enjoy the process, because process has its learning. The results ends the joy, right? So जो कुछ भी करो, you just enjoy that. Try to once involve yourself in each and every nitty-gritty of that work, right? Then maybe even getting the things, getting the photocopy of the things done. Because कई बार ऐसा होता है, अगर कुछ नई प्यून आया और आपको बोला गया कि आप फोटोकॉपी निकालो, तो you should not feel shy and then you should complain कि मुझे तो प्यून का काम दिया गया था. No, it's not like that. It is not always you are given that work. It is because you are being part of that office family and Pune is not there. That's why you are given a work, right? So enjoy the process, right? Really at the end of the day, right, you will feel it satisfied. And it is apart from just being knowledge oriented, apart from just being result oriented, right? Imbibe skills which are needed in the times to come. Because when I personally see the new syllabus is keeping technology as an optional thing. Or you can say in a self-based mode. It is keeping legal side on a self-based mode. It is keeping strategic things on a self-based mode. Then my thing is, friends, students, आपको जो चीज अभी interesting लगती है, like income tax. I'm no way criticizing anything. Income tax, GST, accounts, all this because of AI is going to be taken over by artificial intelligence. But what you think is not interesting right now, like economics, strategic management, litigation side of the practical subjects, right? Or maybe the legal side. This is the future of chartered accountants, right? So right now, don't have any prejudice toward any subject. You may love one subject, but that does not mean that the other subjects are useless, right? Try to get the edge on everything. Make yourself more skillable. Develop your skills, because subjects may come and go, right? Fields may come and go, but you as a professional, if skilled, you are going to survive in any times to come. So be skillable, enjoy the journey, and that's how you come out. Or you are, from this day, when you learn this, you are a professional. Great, sir. Great. Sir, I have checked that. अगर मैं नटसल में बोलूँ ना, internship, the most important part of a student life. You are entering into a professional world, a corporate world. सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है. You are going there not only to learn. जो 3 साल में आपके रिलेशन बनेंगे ना, not only with your principal, with your colleagues over there, आपको लाइफ टाइम काम आएंगे. एंड वो आपको काम आने भी चाहिए. इवन ए क्लाइंट ओवर देयर, आपको क्लाइंट अपने प्रिंसिपल उठाने नहीं है, पर कुछ भी गाइडेंस के लिए हेल्प करेंगे आपको. एंड आपके प्रिंसिपल जैसे काम करते हैं वैसे काम आप करने लगोगे. वो हो ही जाता है. आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे आपके प्रिंसिपल आप देखोगे 3 साल तक वो ऐसे काम करे, ऐसे आपके अंदर आएगा. एंड वो बोलते हैं ना, ऑलवेज गो फॉर एक्सीलेंस. कामयाबी झक मार के आनी ही है, पर लोग वो नहीं सोचते. करवा खाते करूँ जाए, करने के लिए करना है. वो एटीट्यूड हटा दोगे लाइफ में तो आप सीए ऑलरेडी हो चुके हो. एंड सीए अगर आपने सोचा मुझे सीए करना है, वो करूंगा उसके बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा, ये सोच लेना. हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में आप सीए बन जाओगे ऑब्वियसली, उसके बाद ही मैं कुछ और सोचूंगा. ऑब्वियसली इतना तो पक्का है, कभी इंस्टीट्यूट भी अगर आप जॉब करते हो ना, 9 लाख का पैकेज मिनिमम देती है. एंड सीए के साथ में एक और उपाधि आती है, सर और मैडम. आपको भला इंसान सर या मैडम बोलना ही है. एंड जो बंदा सीए करता है ना, उसने इतना स्ट्रगल किया होगा, एटलीस्ट मेंटली प्रेशर सोचो, इतने सारे काम करने का प्रेशर, सब कुछ. आप एक अलग इंसान बन के आओगे. सो एंजॉय दिस स्पैन ऑफ योर लाइफ. आप उसको लोड मत लो कोई भी काम को कि ये लोड है. वंस यू विल एंजॉय दिस पीरियड, दुनिया अच्छी है आपके लिए. नॉट टू वरी. सर, आई वांट टू जस्ट टेक वन क्वेश्चन. Asma Sheikh have asked, should I add in resume that I have skills like drawing, it's my hobby, or should I tell orally in my giving my intro initially? So I would like to answer this question. So you can say this into your extra co-curricular activities. You don't have to, because you draw, that is not much relevant to them.
That is not at all relevant to them, I would say. But you can say that yes, you do this as your hobby or you love to do it, and you can add this into your resume as well, into the hobbies part. When you add personal detail section, then you can just normally add that yes, you love painting or like that. Perfect. Very well said. So it was really a great session on that part. Now बोलते हैं सब इंसान लालची होते हैं, तो इवन फिनटेक चैनल का भी एक है कि एट द एंड आई ऑलवेज आस्क माय एक्सपर्ट पैनलिस्ट few lines about fintech Chanakya. It may be your experience or something like that. It may be good or bad. If it's a bad, we will learn something new with that thing. There is always a chance to improve of that. And the same thing I'm telling about to my even viewers and subscribers. आप कुछ comment करोगे हम लोग को मालूम पड़ेगा what we have to improve. So starting with Divesh. No, all I would say, sir, is I think this will really help the CA students out there. आपने एक पहले भी webinar लिया था, and I know you've been taking seminars, webinars, you create videos on YouTube, even FENIL Search does. So all of this will really help all the CA students and in general all the folks out there. So that is very helpful. Thanks. Riya, please. Yeah, so sir, guiding a student is very important, because many times I meet students, they come and say कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था. But when people like you come in the front and help, like to help the students, and just for free of cost, is very very important, because guidance ही हमें कहीं से कहीं लेके जा सकती है. So that's a really noble initiative that you have took up and doing on your YouTube channel. Really thankful. Thanks a lot, Riya. Coming to Fenil sir, please. Yes, Simran bhai, really nothing like wrong about, but you can say that yes, I also too watch your shorts, right, which you the appropriate point of time and guiding, because many times it happens that even though we are in same field, but we might not be aware of that particular thing. So keep continuing that journey of making shorts for a longer period, right, and serving this way, right. This is also one type of philanthropy, and I also know that you also have an NGO, right? And many times we also do the things together. Yes. So yes, if this way, if we all come together with a clear intention of serving the profession or serving the society or serving the students, right, then obviously the intentions are set right, then everything is going to work in a way, and yes, it's going to be a wonderful future in the times to come. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, all the panelists, from the bottom of my heart, from all our supporters, from all our subscribers and all the viewers, that you have given more than 1.5 hours from the precious moments of your life. And especially to sit on Sunday is really a commendable thing that we know. And especially to acknowledge the students, जिनमें हमेशा क्वेरी होती है हम क्या करें कि ना करें. एटलीस्ट अगर 10 बच्चों को भी कुछ अच्छा कुछ मालूम पड़ेगा, मैं मानता हूँ कि हमने कुछ अच्छा काम किया. जैसे भी फेनिल सर ने कहा, we have already started a philanthropist activity to guiding them at least on that part. So friends, hope you have enjoyed this session, and we have tried कि easiest language में easiest manner में हम आपको सब practical expose आपको हम सिखा सके on that part. मैं हूँ CA समीर चौधरी from Fintax चाणक्य. ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, enjoy कीजिए ऐसे, and yes, please connect with all the panelists on their social media platform. तो आप भी अपडेट होगे. Thanks a lot for being a part. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you.